Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, क्या बवाल मचा इस हफ्ते में. Obviously doing a weekly roundup और उतना ही नहीं, लास्ट 24 आवर्स में क्रेजी ट्रांसफर न्यूज तो बहुत सारे बातें कर रहे हैं. तो एवरीवन गेट इन योर कमेंट्स, गेट इन योर क्वेश्चंस एंड अगेन लेट्स लाइक, सब्सक्राइब. और अगर आप नहीं किया शेयर तो प्लीज शेयर करिए. आई हैव ट्वीटेड अबाउट इट so that we have ज़्यादा लोग from all the clubs, because we are going to discuss transfer stories of literally every club out there. और yes, आज सैटरडे है तो मैं थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ. Hopefully we'll be back online on Almighty Sports Plus as well आज रात को. So please याद रखना वो भी, because we are trying something new. बहुत सारे new content आने वाले absolutely. लेकिन again let's actually big up a couple of people जो है chat में, और जो भी है भाई सब लोग. What is the most exciting story of the week in transfers, और जो disappoint भी किया आप comment करिए. यहाँ पर Potato Boy in the house, Spurs. तो Spurs की बातें हम करना चाहेंगे definitely. There is sufficient news about Spurs for sure. लेकिन हाँ, we'll come to that. लेकिन happy to see you live, Shrey. Absolutely यार, मतलब happy to see you live. Shout out to Shrey as well, because Shrey is our recent member. और yes, we have started membership. For those of you जो नहीं जानते हैं, please take a look. There will be certain changes in that, लेकिन certainly there will be a lot of fun activities planned in the future. Absolutely. Can you make me a mod please? चलो बना ही देते हैं mod. Definitely I can make you a mod because you're quite regular. लेकिन वही है, at the end of the day you have to kind of follow the norms जो हम generally follow करते हैं. But Potato Boy probably knows it, so I think that's why it's only fair to make Potato Boy. But अगेन पीपल जो भी आए हैं सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम बताए कि आज अंकित इज लिटिल बिट अर्ली देन यूजुअल, बिकॉज देयर इज सो मच टू टॉक. मैं बोला यार, मतलब शुड आई कॉल पीपल, शुड आई डिस्कस, लेकिन पहले न्यूज ही इतना है कि इतना सारा बात करना, और देन विल रेट एज ऑलवेज. फॉर पीपल आउट देयर हु डू नॉट नो, कम ऑन, हम रेट करते हैं इस चैनल में एवरी ट्रांसफर स्टोरी और एवरी फिटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑलमाइटी, माइटी, सो वीक और वेरी वीक. तो या गेट इन योर कमेंट्स विद ऑल योर रेटिंग्स एज वेल एक ट्रांसफर के बारे में. और हम अगेन विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम क्लब टू क्लब, राइट. तो यहाँ पर जल्दी से मैं पोटैटो बॉय को बना देते हैं मॉड. लेकिन पोटैटो बॉय अगेन बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि यस कपल ऑफ मॉड्स काफी स्ट्रिक्ट है. इफ यू आर वांटिंग टू काइंड ऑफ गिव अ वार्निंग टू समवन, गिव अ वार्निंग, फिर ही ब्लॉक करना. उससे पहले भी मुझे बोलना प्लीज पोटैटो बॉय. बट द आइडिया इज जस्ट टू काइंड ऑफ एज एन एनकरेज स्ट्रीम, एंड ऑफ कोर्स कुछ गलत है, कुछ समथिंग फीडबैक है मेरे लिए, तो प्लीज शेयर फीडबैक विद मी. एसके आसुंदर, योर क्विज इज टू गुड. एसके आसुंदर, थैंक यू. बट मैं बोलना चाहूंगा क्विज ही नहीं, एब्सोल्युटली हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक फॉर द फीडबैक, एंड एनी फीडबैक इज फीडबैक, राइट. लेकिन आप देखिए हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट है. यस, शॉर्ट वीडियोस वी आर काइंड ऑफ रिड्यूस्ड in the summer because of the kind of transfer window going on, और ज्यादा है बातें करने के लिए. आई थिंक डिस्कशन ज्यादा हो रही है आजकल अपार्ट फ्रॉम द क्विज. But we do a lot of short videos भी. Check out a playlist, बहुत सारे सीरीज है, to do check it out absolutely. And उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना पड़ेगा सब लोग को. हम लोग क्या कर रहे हैं, चेल्सी आएंगे यार, चेल्सी डेफिनेटली. वेल लेट्स सी, Zaniolo to Spurs is what Potato Boy is saying. Interesting. वो अगर वो सच है तो Yagami Light, चलो nice to see you always. And Anshuman as well, the United Road in the house. Thank you for joining Anshuman. Always अच्छा लगता है when you come on. And who else? Lumanu, of course, always supporting the channel. Bang, of course. First signings कब करेगी? वही talk of the town वही है, absolutely. Praveen, नहीं यार, करेंगे, बात करेंगे. Yo, hi, yes, absolutely. Ali Gaming, big up to Manav Baga bhi, another member in the house. Absolutely, बढ़िया being having Manav here, because again talking about the quiz, बहुत अच्छा performance Manav का in the chat. मुझे भी बना दो mod. अच्छा, मानव mod नहीं है क्या? मतलब that is very kind of strange. But while I make the mod, सबसे पहला news again. Chelsea fans कहाँ से शुरू करें? Even Manchester United fans. To be very honest, हाँ, मतलब आप बोलोगे it's just 25 जून है अभी, इतना पैनिक मत हो. There is time, but the fact is भाई, literally every every club is signing, every club, or even Arsenal are doing stuff. हाँ, आर्सेनल आर्ग्यूबली बोल सकते हो लास्ट टाइम भी बहुत सारा बिजनेस किए थे, बट अगेन आई वुड से दैट आर्सेनल certainly is kind of surprising. और the reason is because Gabriel Jesus, जो एक प्लेयर चेल्सी भी थोड़ा इंटरेस्टेड थी, yes, as per reports, as per Fabrizio Romano, has basically been guaranteed a 45 million pound deal. Yes,
45 million pound, और वो हो गया है कल। आई थिंक फैब्रिशियो रोमानो ने ट्वीट किया था क्लियरली, दैट इज फॉर एवरीवन। लेकिन पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस वी विल कम टू चेल्सी बिकॉज गैब्रियल जेसस आल्सो लिंक्ड टू चेल्सी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गैब्रियल जेसस साइनिंग? आप कहां पर रेट करोगे गैब्रियल जेसस की साइनिंग? एवरीवन इन द चैट बोलिए मुझे। और यस, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई विल बी टेकिंग एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सुपर चैट इफ यू कैन अफोर्ड, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई कम स्लोली बट स्टेडीली, जितना हो सके मेरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, गैब्रियल जेसस, Arsenal and Man City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. That is yesterday. Deal in place after new meeting. Been told guaranteed fee is 45 million pounds. Arsenal are working on personal terms with Gabriel's camp. Final step to be completed very very soon. और आज भी basically इन्होंने actually वीडियो निकाला है that Arsenal director Edu is working around this weekend for the final details. तो वही है, they are working 24/7. But what about Chelsea? चेल्सी हम कर रहे हैं फोकस, और अगेन फैब्रिशियो रोमानो ने कंफर्म किया है दैट वी आर डेफिनेटली टॉकिंग। इनफैक्ट थॉमस ट्यूकल ने बात कर ली है विद स्टर्लिंग एज पर रिपोर्ट। यस, देयर हैज बीन अ कन्वर्सेशन, बट इज दैट कन्वर्सेशन इनफ? इंटरेस्टेड एफसी, दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड दीस डेज। क्योंकि वही है, जूल्स कुंडे यार ऑलमोस्ट मतलब कितने 7 8 9 10 महीने हो गए जब से हम इंटरेस्टेड है, लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा वहां पर? लेकिन पैसों की बात आ गई ना। सेविया बहुत ही चिंदी करती है, सॉरी सेविया, आई नो दैट आई मेट यू गाइस एंड डेफिनेटली दैट वाज अ प्लेजर, बट द फैक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इट हैज नॉट बीन ग्रेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद सेविया। सो दे आर आस्किंग फॉर आई थिंक 65 मिलियन यूरोस प्लस। हम एक्चुअली वैल्यूएशन कर रहे हैं जूस ढूंढने का अराउंड 50-55 मिलियन मैक्सिमम, उतना भी शायद ही। दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम, वो एक डेडलॉक हो गई है। कुलीबाली ऑन द अदर हैंड, फॉर व्हाटएवर रीजन, जस्ट लाइक लेवेंडोव्स्की डजंट वांट टू कम टू चेल्सी, उतना ही लग रहा है, ठीक है। तो कुलीबाली तो आउट ऑफ द विंडो चली गया। तो apart from Jules Kunde, who's a centre back option for Chelsea? I think अभी, as आपने thumbnail में देख लिया, Ligt is a big story. Yes, वहां पर Arsenal Gabriel Jesus को कर रही है in the forward line and we are talking to Raheem Sterling, वो जो talks है, but is it something major happening in Ligt story? और क्या difference है? Difference is that our Mr. Todd Bowley, जो है हमारे new chairman as well and of course the director for the time being, yes, इस हफ्ते वो भी न्यूज आई थी, राइट? हमारी hierarchy kind of was announced. So Todd Bowley has actually in fact offered कि why don't we offer someone like a Timo Werner to Juventus? और यहाँ पर कैश क्या है? क्यों Timo Werner plus cash for Ligt? Why that? Timo Werner is a striker, Ligt is a centre half, right? Timo Werner is a striker जो 2 साल पहले was the hot property of Europe. We bought him for 51 million if I remember right. लेकिन भाई the difference is Ligt का एक release clause है. As things stand, Ligt has a release clause, if I'm not wrong, 120 million euros. Yes, 120 million euros. और Ligt के साथ जो यूवेंटस बात कर रही है इतने महीनों से और इतने वीक से, just like it was happening with Chelsea, वो प्रॉब्लम यही आ रही है बिटवीन Ligt एंड यूवेंटस कि भाई मुझे ये रिलीज क्लॉज कम करके दीजिए मुझे, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते देन ही माइट बी ओपन फॉर अ मूव। अगर दे रिड्यूस द रिलीज क्लॉज देन ही माइट बिकम द मेन सेंटर हाफ इन यूवेंटस, जो हुआ करते तो ऑब्वियसली Chiellini. So that will be interesting. Again, रेट करिए। फॉर मी जेसूस टू आर्सेनल, फिटमेंट वाइज मैं बोलूंगा जेसूस टू आर्सेनल इट इज बेसिकली so. हाँ, सरप्राइज? क्यों सरप्राइज? यस, डेफिनेट अपग्रेड टू एनकेटिया, डेफिनेट अपग्रेड, इवन यू कैन से आर्ग्यू कर सकते हो लैकेजेट के लिए इन टर्म्स ऑफ बेसिकली फिनिशिंग। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से जेसूस इज नॉट ready in terms of the top level yet. हाँ, for Man City he was doing it lot, he was at the end of lot of balls, right? लेकिन अभी Jesus will not have that, and plus the fact that Gabriel Jesus is not like a focal point, और मेरे ख्याल से आर्सेनल को चाहिए था एक focal point, इसलिए मैं बोल रहा हूँ so. तो I am not, मतलब बहुत उदास नहीं हूँ कि Gabriel Jesus is not coming to Chelsea, ठीक है। But congratulations Arsenal fans, very good deal for you overall in terms of money, क्योंकि 45 million आज के दिन में for a young striker जो प्रीमियर लीग प्रूवन है इन अ सेंस, राइट, डेफिनेटली गुड, और वो विंगर भी खेल सकता है, तो वेरी गुड ओवरऑल बिजनेस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिटमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है सो होगा। लेट्स सी, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप भी रेट करिए। एंड व्हाट अबाउट Ligt टू चेल्सी? नाउ Ligt टू चेल्सी, व्हाइल गैब्रियल जेसूस टू आर्सेनल लाइकलीहुड तो ऑलमाइटी लग रहा है, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डन, लेकिन Ligt टू चेल्सी मैं बोलूंगा अभी भी सो है इन टर्म्स ऑफ लाइकलीनेस, क्योंकि यार वही है, अगर वो
डेम्बेले वाला हो जाता है वापस से कि यार बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, दे ही माइट जस्ट स्टिक ऑन टू यूवेंटस। और डेम्बेले भी बाय द वे वही लग रहा है अभी एज थिंग स्टैंड। तो वहां पे 40 लोग आ गए, सब लोग लाइक कर दीजिए, सब एटलीस्ट 80 लोग होने चाहिए, कम ऑन। यूट्यूब एल्गोरिथम ऑलरेडी बोल देगा, एंड दैट इज हाउ वी विल काइंड ऑफ डिस्कस मोर। और यहाँ पर आते कुछ कुछ कमेंट्स लेते। और गुड इवनिंग फ्रॉम अ बारसा फैन कबीर। यस, बारसा की बात कर रहे हैं हम, डेम्बेले ऑलरेडी शुरू हो गई बात थोड़ी थोड़ी। Hi Ankit bhai, Luke De Jong in the house. Always good to see you, bro. I also follow you every day. Can I be mod too? Yagami Light, again, वो mods काफी सारे हैं, but if you feel that okay, अगर आप करते हो, like Potato Boy has been kind of doing it for a while in terms of just encouraging the chat. अगर आप कर सको वो ज्यादा, definitely will do it. Yagami Light मैं याद रखूंगा, and yes, thanks for the support. Obviously, really thanks. और मैं करूंगा डेफिनेटली, याद दिला देना वापस, बट जस्ट फॉलो व्हाट अदर मोड्स आर ट्राइंग टू डू, राइट? होपफुली इट हेल्प्स। स्वास्तिक, हेलो, नाइस टू सी यू एज वेल। स्पर्स प्लेयर्स साइन कर रहा है, आर्सेनल कर रहा है, सिटी कर रहा है, लिवरपूल कर रही है। देखते हैं। हे अंकित, हेलो टू जस्ट वायला, एंड यस ऑफ कोर्स लू मैन्यू एज वेल, बिग अप। एंड यहाँ पर मैंने मिस कर दिया था शायद, लेकिन shout out है यश के लिए, thank you for the super chat, absolutely means a lot. Again, a big fan of your humility, Ankit. Yeah, big fan of you all, because without you all the channel will be a little bit boring, क्योंकि यार ज्यादा questions होते हैं, ज्यादा discussion होता है, ज्यादा reaction मिलता है, that is how discussion happens generally, right? And especially football. But यश को shout out है again, जो भी super chats आ रहे हैं, जो भी memberships आ रहे हैं, I have to tell you again कहाँ पर जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली राइट नाउ, इट्स नॉट कम टू माय पॉकेट, इट इज गोइंग टू यूट्यूब, और वो काट के आता है मुझे। वो जो आने वाला है इन द फ्यूचर, आई एम प्लानिंग टू काइंड ऑफ री-इन्वेस्ट इन द चैनल। ऑफ कोर्स बोथ द चैनल्स, अदर चैनल ऑलरेडी स्पोर्ट्स प्लस इज नॉट येट मोनेटाइज्ड, बट वी विल गेट देयर एब्सोल्युटली। तो वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर, देयर हैज टू बी अ लिटिल बिट अपग्रेडेशन, सबको मालूम है, दैट इज समथिंग दैट इन द वर्क्स होने वाला है डेफिनेटली। यस, थैंक यू। Dug Out Football Channel, shout out to Doug, great channel, Liverpool fan in the house, and we'll speak about Liverpool as well, absolutely. Jesus is a good signing, Justwala says. I wanted him Chelsea. Well, Justwala, I hear you, but at the same time, is it someone that you will, be feeling he needs? Big loss, I don't see. Well, let's see. Hopefully, we'll get a better signing, better in the sense someone जो हमें चाहिए ज्यादा ना, that's what I would say. CFC Blues, I think आप mod already नहीं हो क्या? अच्छा, उसमें होंगे, दूसरे चैनल में होंगे, लेकिन CFC Blues डेफिनेटली यार इनका तो बनता ही है, स्पेशली चेल्सी फैंस, मतलब थोड़ा बायस तो रहेगा विद चेल्सी फैंस, मतलब नॉट एज फैंस, लेकिन चेल्सी इज अ क्लब, राइट? तो अगर चेल्सी फैंस आते हैं तो ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड बट एवरीवन, लाइक आई से, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। And big up to Mikhail as well. Big up Almighty Blues. Kalvin purchase being paid for by Chelsea buying Sterling. Another shrewd acquisition by another shrewd club. तो उसकी ही बात कर लेते हैं। चलो, Mikhail, by the way, big up. He's our member. In fact, Mikhail is our coach. He's our coach, Almighty coach. So check it out again, the membership. Lekin having said that, shout out to Mikhail even for his articles on Chelsea perspective, and give him a follow on Twitter. अगर नहीं करते तो मुझे फॉलो करिए और मुझे डीएम करिए, मैं बताता हूँ कहाँ है Mikhail, right? Big Chelsea, fan here, but I think, come on, Kalvin Phillips, I know it's a very shrewd signing, I agree, and if I'm not wrong, ये एड-ऑन्स मिलाकर 50 मिलियन पाउंड होगा, ठीक है? 50 मिलियन पाउंड फॉर अ प्राइम इंग्लिश स्टार्टिंग central midfielder back in the day, you know what you mean, as in we are probably, I don't want to compare, but are you talking about Lampard, Gerrard and Overhargreaves, Paul Scholes, that level of player? I don't think so. Yes, Kalvin Phillips is brilliant, don't get me wrong. He got basically, England, if I'm not wrong, to the finals of the Euros. Great performance in the Euros, absolutely. लेकिन लीड्स के लिए he has been injured as well last season में, तो हो सकता है, I don't know whether he's injury prone or not, वो एक चीज होता है, maybe that is why थोड़े सस्ते में मिल गया, you can argue, being coming from Leeds और Manchester, there is geographical rivalry, लेकिन the fact is Kalvin Phillips के लिए there were other teams in England who were interested, there was PSG also interested, तो people in the chat rate करिए Kalvin Phillips to Man City in terms of fitment, कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से for him to fit in the starting 11, they have to change the formation. मुझे नहीं लगता Kalvin Phillips and Rodri is required the way City play, ठीक है? तो that is मेरे ख्याल से थोड़ा सा negative for Kalvin Phillips, camp perspective. तो इसलिए मैं बोलूंगा so. और how does he impact directly ऐसे impact करते हैं, like कौन थे पहले? Fernandinho, in a strange way he's replacing Fernandinho, you can argue that.
अगेन पीपल माइट डिसएग्री, मेरे ख्याल से अगेन कैल्विन फिलिप्स इज ब्रिलियंट. हाँ, कंपटीशन काट दिया सिटी ने. दे मेड श्योर दैट अदर क्लब्स डोंट टेक कैल्विन फिलिप्स, तो वहां पे दे हैव डन एन ऑलमाइटी जॉब. बट is he an upgrade to Fernandinho? A very different player, but is he an upgrade to Fernandinho from say 18 months ago? हाँ, recently Fernandinho तो काफी legs चले गए, but obviously that is why they're replacing him. लेकिन 18 महीने पहले जो थे, him versus Calvin Phillips, totally different players, but I would still say जो impact होता है ना एक मैच में, Fernandinho was underrated in my opinion. तो मेरे ख्याल से Fernandinho might have more. Again, I might be wrong. That's just my opinion. But overall, in terms of business, in terms of competition, काटना का जो होता है ना, he has, I think Pep has done a fantastic job because he has made sure that Haaland मिल जाए एक तो cheap में. I know not him, entire City का background, the management, but even Calvin Phillips, or not just that, they are going for Kukurea. So overall business तो Man City का almighty. Man City best transfer window already. मैं तो बोलूंगा yes, absolutely. But yes, again यार, सब लोग जो भी है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलना मत. Again, I know I'm repeating that as a broken record, लेकिन वो तो यार बनता ही है, एब्सोल्युटली बनता है. हम चावल के पीछे क्यों जा रहे हैं? चावल के पीछे इतना नहीं जा रहे, फ्रॉम व्हाट आई हियर, फॉर दिस विंडो. इट इज मे बी फॉर द फ्यूचर. लेकिन यस इज राइट, वर्थ ट्वाइस कैल्विन. एब्सोल्युटली नहीं, इट्स अ चेल्सी टैक्स. ट्रस्ट मी मिकाइल, इट्स द चेल्सी टैक्स. आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज. हाँ, यू कैन आर्ग्यू दैट राइस का जो इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट एज अ प्लेयर, हिज इंप्रूवमेंट हैज बीन मोर देन डबल व्हाट कैल्विन फिलिप्स इंप्रूवमेंट हैज बीन लास्ट 12 महीनों में. लेकिन यार 12 महीनों में कैल्विन फिलिप्स वाज इंजर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर ईदर. तो मैं आई एग्री, लाइक द क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. इज राइस वर्थ ट्वाइस कैल्विन? एब्सोल्युटली नो. एंड इज चेल्सी टैक्स, ट्रस्ट मी, मैन सिटी भी चीप में ला रही है भाई प्लेयर्स को आजकल. तो पता नहीं क्या ही हो गया. मतलब कैल्विन फिलिप्स है, एंड नॉट जस्ट दैट, कुकुरिया भी चीप में आ जाएंगे. व्हेन इट कम्स टू चेल्सी, द सेम प्लेयर्स will be quoted high. यार Jules Kounde, यार leave Calvin Phillips भाई. आप Mikhail, talk about this. Who's more finished article and who's entering the prime of his career, Calvin Phillips or Jules Kounde? 100% Calvin Phillips. I know different positions, लेकिन that is what Chelsea tax is, absolutely. लेकिन again, I won't rant too much about Chelsea आज, जब मैं सोच कर आया था, because बहुत सारा न्यूज़ है. Arsenal needs no goals, but buying Jesus is dumb. He will score like 7 goals in Premiership. Robert Lewandowski to Barcelona, क्या होगा भाई? हाँ, चलो. तो यहाँ पर क्विकली, यहाँ पर थोड़ा जंप करेंगे, ठीक है, बार आज. तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना, एज पर रिपोर्ट्स, आई थिंक बार्सिलोना ने बिड किया है रीसेंट, और अदर दे हैव वर्बली सेड कि हम देने वाले हैं 35 मिलियन. ठीक है, 30 से 35 मिलियन के बीच में दे आर कोटिंग. बट इट इज फार फ्रॉम व्हाट बार्सिलोना वांट. हाँ, 700 मिलियन का हो गया उनको लीवर्स की वजह से पैसे मिलने वाले. लेकिन हैविंग सेड दैट, स्टिल Lewandowski has a high salary bracket B. तो एक कैप, सैलरी कैप में would they be able to fit Lewandowski? Secondly, along with that, एक होता है ट्रांसफर फी. ठीक है, तो and he's basically what, a 34-year-old. So I think a lot of questions need to be answered. But Bayern Munich are asking for 50 million minimum. और यहाँ पर लग रहा है मुझे, as per, again I'll try to say the name, Hasan Salihamidzic. मिल गया, एक बार बोल दिया बस हो गया. उसी बात पर लाइक हो जाए. लेकिन भाई, मतलब he was a great player, I have to follow him, a great winger at that. लेकिन having said that, he has said कि भाई Lewandowski is going to be here. That is what I expect, और that is what मुझे लग रहा है कि अभी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना थोड़ा सा सोसो हो गया मामला. एब्सोल्युटली, इट वाज सपोज्ड टू बी माइटी, बट अभी सोसो हो गया. बिकॉज आई थिंक दूसरा स्टोरी क्या था, रोनाल्डो टू बायर्न म्यूनिख, वो नकार दिया गया है बाय बायर्न म्यूनिख. एब्सोल्युटली, तो वो तो नहीं होने वाला. एंड यस, माने इस वीक मूव हुए, बट इज दैट इनफ? नो. आई थिंक रादर गनाब्री निकलने वाले फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, एंड I still feel that Gnabry towards the end of the transfer window will move on to a Real Madrid. That's what मेरा gut feel है, because depend करता है, again थोड़ा domino effect हो सकता है. Real Madrid अगर they get rid of Asensio, they need one player, and Asensio कहाँ जाएगा? Asensio, he has been spoken about to Milan, लेकिन again Milan के links थोड़ा कम हो गए इस हफ्ते, because क्या चीज बड़ा है इस वीक? बड़ा है Ziyech. Yes, last 24 hours में इनफैक्ट फेब्रिशियो ने भी बता दिया है. अभी अगेन मैं शेयर करना चाहूंगा ये, इट हैज बीन कंफर्म्ड जस्ट एन आवर अगो दैट दिस वाज समथिंग दैट इज क्वाइट एविडेंट. अगेन काफी बार बोला था फेब्रिशियो ने, हमने ऑन द चैनल, बट द फैक्ट इज दैट दिस इज समथिंग दैट इज मोर लाइकली, इवन मोर नाउ. Hakim Ziyech's agent have already been
talking with AC Milan board. Ziyech would be happy to join Milan. Been told Chelsea and Tuchel are open to let him go if right conditions guaranteed. Ziyech is on AC Milan list since a long time. अभी ये प्रॉब्लम ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एज पर रिपोर्ट जो इस हफ्ते हुआ था, जो बवाल मचा था अबाउट इंटर मिलान एंड लुकाकू जो होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल न्यूज इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, पक्की बात है ये. वो फॉर चिल्लर जा रहा है बाय द वे ऑन लोन, जस्ट इन केस आपने मिस कर दिया वीक में. तो Hakim Ziyech, how is it different? People, हाँ, definitely very different. He didn't go to the media and say, लेकिन वो how is it different in terms of वो कुछ क्या चाहता है? मतलब is he willing to give his all for Chelsea Football Club no matter what and prove himself? Yeah, he's in the prime of his career. I actually like him. बहुत बार बोला है मैंने चैनल पे. He has that Dutch kind of background also in a sense. लेकिन यार लेफ्ट फुटर है, very unique element है. He would like to do more in a 4-3-3 system, जहां तक मुझे लग रहा है. तो what is the difference between him and Lukaku not being adapting to the system, not being open to the challenge, or not proving enough, or has he proven enough, or has Tuchel not given him a chance? Let me know in the comments. क्योंकि यार ये थोड़ा सा अगर वो खुद चाह रहा है ना तो क्या फी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो लोन फी होगा कम और फाइनल फी भी होगा कम. लेकिन यहाँ पर मानव का ले लेते हैं. मानव सिटी फैन हाउस Kalvin Phillips to Man City would be a gradual transition. Yeah, his utility can be used in physical battle like against Atleti, Real in the UCL. Okay, so basically, it is a very tactical move for UCL and nights like that. If Levas stays, Barca should not sign any forward. They have Oba can move and Fati to the center. Fati वही है injury prone इतने I'm not sure. Depay as well. हाँ, Depay तो रहेंगे अगर by chance लेवा नहीं आता. Absolutely. I think that's a good idea, but again, is it enough for Champions League quarterfinals and stuff like that? I doubt it personally. I think Barca might just actually go for someone. Anyway, Newcastle should work like City, not like PSG. Okay, चलो you Newcastle की भी बात करेंगे absolutely. And Pogba, yes, Divyar City. First of all, thank you for joining. Hope आप subscribe to both our channels. It is always linked in the description below in the first line itself. Pogba, I think, if I'm not wrong, like a Lukaku, longer term, definitely Pogba, much better player, much more proven in the Premier League, definitely better attitude than Lukaku, definitely. Lekin yaar, at some point in time, Pogba kind of proves it. Yeah, he wants to become the center of attraction. He wants basically a easier challenge. Week in, week out, wala banda nahi hai. But he needs love as well. Or jo Manchester United fans, for some reason, some fans, sab nahi bolunga, some fans clearly in the crowd did not give him. And he was really pissed off with that towards the end of the season. Or wo dikh raha tha ki nahi, he was not offered a better contract, I believe, and he wanted more for whatever reason. Going to Juventus, again, back, maybe very rare player who goes twice to his beloved club again, lekin on a free. Wow, he was at one point the costliest player in the Premier League. And think about it. Abhi Pogba goes on a free to Juventus. Juventus के लिए definitely it's an almighty thing, lekin, at least for Serie A, not for Champions League, still I would say. लेकिन यार डेफिनेटली फॉर पॉल पॉगबा ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ एब्सोल्युटली. यार श्रेय का कमेंट था, लेट्स सी, श्रेय का कमेंट मैंने मिस कर दिया, देखते. इन फीफा 2020 आई बॉट काई हैवर्ट्स एंड वर्नर टू चेल्सी व्हेन देयर वर नो रूमर्स एंड दिस एक्चुअली हैपेंड इन रियल लाइफ. चलो श्रेय, हम फीफा खेल रहे हैं और ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, बाय द वे, आप अगर नहीं चेक किया तो प्लीज चेक इट आउट. यस, इट्स काइंड ऑफ न्यूइश अगेन, बट hopefully you tell me which players to sign and we'll hopefully get them. What do you say? Fast forward to 2022, I brought Ligt. Can I be lucky charm for Chelsea this time? Absolutely, bro. Looks like it. But yes, यहाँ पर यार likes हो जाए, कम से कम 100 likes होने चाहिए as things stand. Hopefully we'll get to 200 likes as well. By your views on Liverpool's number 6 position. Okay, यार number 6 position again. अभी के लिए, to be honest, they have a Keita, they have a Fabinho, Henderson है. If I'm not wrong, Milner is also staying. Kirish, correct me if I'm wrong. So they have a lot of players जो कर सकते हैं job as a backup as well. मेरे ख्याल से they can be enough. लेकिन वही है, if there's a major injury to a Fabinho for instance, then that kind of backup is not there, because that backup को आप expect करोगे to play week in week out. ठीक है, जो हुआ था चेल्सी के साथ with wing backs, जो हुआ था लिवरपूल के साथ ही 2 seasons back. तो that is the main problem for me. मेरे ख्याल से वो एक position address करना है. और as per reports, Bellingham is the guy. वाइनाल्डम के टॉक चल रहे थे, बैक ऑन लोन. हाँ, हो सकता है विद पीएसजी साइनिंग विटिनिया, विद पीएसजी होपफुली गेटिंग रेनाटो सांचेज. लग रहा है दैट माइट बी द थिंग. लेकिन हैविंग स्पोकन अबाउट पीएसजी, इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि Pogba did not opt to go to France, his country, and play for PSG when I'm pretty sure वो लोग इंटरेस्टेड थे.
That's kind of strange for me. He doesn't want the challenge because PSG में pressure ज़्यादा है. That's what my view. Again, I might be wrong. चलो और कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर. अगेन आई माइट स्किप कमेंट्स क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं. इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज यू कैन ऑलवेज गिव अ सुपर चैट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो आई विल कम बैक. ठीक है. Okay, no, this is another Shrey Alumanyu. This is Shrey Patil, but always good to have both the Shreys. How would you rate Dembele to Chelsea? Unfortunately, Dembele to Chelsea अभी weak लग रहा है. Yeah, that is for real. And Chelsea पे वापस से quickly आ जाते हैं because I think डिलिक्ट ही नहीं, डिलिक्ट इज समथिंग दैट मैं बोल रहा हूँ कि यार वो वापस से इट्स काइंड ऑफ नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, in terms of fitment, brilliant because De Ligt plays for the Netherlands team in a 3 at the back system. He plays for Juventus in both the kinds of system. तो काफी अच्छे है. Plus the build he has for Premiership ideal. हाँ, penalty proof kind of देते हैं just like कुंडे कभी कभी, लेकिन better than Kunde in terms of making mistakes, lesser mistakes than him. He's more ready, or he's a leader as well. That helps. Ajax में we all know he was a proper leader. Juventus में yeah he's not taken like fish to water, लेकिन maybe in Chelsea he'll take under Tuchel. That's what मुझे लग रहा है. तो वो तो लग रहा है strong, लेकिन another centre back अगर हमें नहीं मिलता है डिलिक्ट, और अगर मिलता भी है नेथन आकी, people what do you think about नेथन आकी? हाँ, Dembele to Chelsea is a left footer, but generally with Ziyech going we need a left footer. That would have been interesting. तो अभी अगर Dembele नहीं आते तो we need a left footer. I know Nathan Ake is a centre back, no way connected. लेकिन अगेन जस्ट टॉकिंग अबाउट चेल्सी, आई थिंक मेरे ख्याल से द फोकस हैज काइंड ऑफ शिफ्टेड टू स्टर्लिंग इन द फॉरवर्ड लाइन. स्टर्लिंग को हमें डील क्लोज करना है एंड डिफेंस में हमें एक लाना है बिटवीन नेथन आकी, जूल्स कुंडे एंड डिलिक्ट. दीज आर द 3 ऑप्शंस यहाँ तक, और इट्स अबाउट स्टर्लिंग. तो मेरे ख्याल से अगर स्टर्लिंग को ला देंगे, आई डोंट सी डेम्बेले कमिंग टू चेल्सी एनी टाइम सून. हाँ, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो. अगर वो सागा कंप्लीट नहीं होता, वी माइट बी इंटरेस्टेड अगेन. वैसा लग रहा है मुझे. Again, that is just my rating. You all also rate please. आज क्विज होगा क्या अनुभव? आज क्विज तो प्लान नहीं है, रोज तो क्विज नहीं कर सकते, लेकिन हैविंग सेड दैट कंटेंट मिलेगा भाई. तो ये क्विज चैनल नहीं है, ये है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, जहां हम क्विज करते हैं, हम टॉक शोज करते हैं, हम प्रीव्यूज करते हैं, रिव्यूज करते हैं, हम हिस्टोरिकल सीरीज करते हैं, काफी सारा चीज करते हैं. होपफुली आपको अच्छा लगे. बट इवन ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, बिकॉज यस वहां पर हम मे बी क्रिकेट भी करेंगे कल, but at the same time वहां पर FIFA गेमिंग शुरू हो गया है with a lot more other content, transfer news as well. Gundogan role more like a box to box rather than DM role. Well, okay, मतलब I hear you football tweaks, fair enough, but again is he an upgrade to Gundogan? nahi, simple. I'm just being honest. Is he better than what other clubs have signed? Absolutely. It's a steal. ठीक है, even at 50 million including add-ons, it's a steal. But from City's perspective, is he going to upgrade your midfield? That is my question mark. Gundogan, I still feel he can do a great job in my opinion. Well, would love to have Sterling and Dembele on the wings. Aniruddha, again, I would rather have. अच्छा, चलो, तो मेरे ख्याल से ना चेल्सी को लेफ्ट साइड में इतना प्लेयर्स की दरकार नहीं है, to be very honest. I believe that Pulisic में उन्होंने इन्वेस्ट किया है and Pulisic में they believe. So long-term left winger for Chelsea should be Pulisic in my opinion. A starter, yes. Or Mount can do a job there. ठीक है, तो that will be a major kind of starting point. अगर हम system change नहीं करते. In the right forward position, basically having Sterling and Dembele both is kind of, I don't know, too much luxury, or it might say them that अरे मुझे matches नहीं मिलेंगे, तो वो manage करना थोड़ा difficult हो जाएगा. But in terms of अगर माने, it'll be brilliant. Not Mane, Sadio Mane, who moved to Bayern Munich, but it will be brilliant because Sterling and Dembele kind of would complement each other brilliantly. मेरे ख्याल से, with Sterling sometimes playing a false nine as well, that could be working brilliantly. लेकिन again, where is the strength? Where is the real body strength? वहाँ पर Havertz, that's why it's required on the pitch, in my opinion. Is CR7 to Real Madrid greatest transfer ever made in football history? Well, I would not say greatest transfer ever made in football history. मतलब हाँ, you can argue in terms of stats 100%, in terms of what he's achieved with the Champions League against 100%. But again, आप value for money नहीं देखोगे. Value for money में देखोगे तो maybe I don't know. हाँ, उस समय के लिए I think value for money में it was still expensive, right, overall. But वो उन्होंने वापस दिया है. तो I would say shout out definitely है, right among the top. लेकिन I think a lot of transfers have happened. मतलब मैं तो argue करना चाहूंगा. Even N'Golo Kante to Chelsea, यार, मतलब N'Golo Kante to Leicester. How was that?
Maybe that is the kind of transfer that you need. Oh, Jamie Vardy. People, Jamie Vardy, Jamie Vardy. What an underrated striker as well in the Premier League. But we want Reece James and Real Madrid. अरे अभी के लिए तो नहीं मिलने वाला, at least for timing. Liverpool is listening to offer for Salah around 60 million. Yes, yes. This is the big news. By the way, as per it reports, Mo Salah has been offered 350k per week. 350k per week. I think that's very good. Let's be honest. माने थे 100k per week pay as per reports. So I feel that is a really, really good offer. So अगर 350k per week पे नहीं मानते हैं, then he will be allowed to move on. And then come on, Burley सुन लो भाई, ex Chelsea, we love to buy ex Chelsea. Nathan Aki भी हम जाने वाले, absolutely. Why Chelsea are not chasing Felix? Well, जवाब भाई, I think मेरे ख्याल से Felix के लिए वही है, like I said, Felix is a young guy जो अभी भी ऊपर है उनका ceiling. He can kind of still improve, and in a strange way he kind of is not very dissimilar to Havertz. तो हो सकता है चेल्सी वांट वैरायटी, चेल्सी को चाहिए वैरायटी अटैक में, इसीलिए हम लाए थे लुकाकू को, जो लुकाकू ने लकाका कर दिया उसको. लेकिन लेफ्ट विंग में also like I said, Pulisic is something that maybe Burley and co, because Burley are part of the board है, remember he's not just the chairman. So maybe they are at least for the timing thinking that Pulisic में invest किया है. Timo Werner, by the way, if they are offering him to Juventus, अगर वो ले Ligt आए तो बढ़िया है, ओपनिंग हो जाएगी वहां पर. लेकिन Hudson Odoi, unfortunately for Chelsea fans, at least me, Hudson Odoi brilliant player, ability brilliant, लेकिन application implementation नहीं. Hudson Odoi, unfortunately, the reports are that Tuchel and Burley are planning to have a conversation with Hudson Odoi, asking him to stay and improve himself. Yet again, can I believe it? I can, but do I like it? I don't, and that is why I'm saying that काफी सारे wingers है. Maybe with Ziyech going, आप सोचोगे, but is Felix a right winger? Really, no. So I don't see that happening absolutely. लेकिन I can see why maybe Spurs are going for it. लेकिन again, is Felix okay for a secondary role? That is the only problem. क्योंकि वो start तो नहीं करेंगे Spurs में भी, my opinion. हाँ, आप बोल सकते हो they'll play 4 up front. I really doubt it. Knowing Conte. तो yeah, Joao Felix to Spurs, maybe I would say so. Joao Felix to Chelsea, weak, absolutely weak. लेकिन I think Felix, even City might go for Felix as per reports. अगर Jesus और Sterling दोनों ही निकलते हैं, and if Alvarez को decide करे in case he might go on loan, then Felix might come. Okay, how will Chelsea Man United fans feel if Lukaku and Pogba shine for Inter and Juventus? In the past also, Lukaku has shined. In fact, I always felt bad. I'll be honest. यार मुझे अच्छा नहीं लगा था when Lukaku did well. In my opinion, not too badly with lot other clubs as well. लेकिन at the same time, भाई अभी जो हुआ है in terms of off-field issues, I don't think I'll feel so bad. हाँ, I'll feel bad if he wins a Champions League final against us, scoring a goal. Absolutely, that'll be the worst nightmare ever. लेकिन he'll not do that. I can write and give you that. I've just told that. Suryansh in the house, shout out to Madrid Pundits as well. Absolutely, Suryansh, काफी अच्छा लगता है. And Real Madrid तो आराम से बैठ रही है अभी. I don't think they need a lot of players. Gnabry अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया मामला, लेकिन मुझे लगता है depends on Asensio going out and then probably things will start again. Pogba is joining 80k Mohan Bogan. Yes, it's his brother. Pogba is the brother, absolutely. Zinchenko is one of the most underrated fullback. If he would play regularly, he would be in the contention for one of the best fullbacks in my opinion. Okay, interesting. मतलब defensively अभी भी थोड़ा susceptible है, लेकिन I get your point. He's a very good ball playing, defensive midfielder / attacking midfielder / fullback. Elaborate on what the nature of love did Pogba want from Man United fans. I think so. What I'm exactly referring to, Lumanu, again, I don't mean all the Man United fans. Okay? I mean some United fans. Again, I cannot say that it is false. Because I did see videos. I did see basically after match when they come to the crowd and kind of clap, etc. When they kind of acknowledge. He was actually booed. It was towards the end of his career in Manchester United, but he was actually booed. Maybe at that point, if that would have happened, maybe he would have thought about staying. But again, is it even a big loss for United with Pogba moving? Honestly, मैं बोलूँ तो नहीं. It's not a big loss. I think it's a right step in the right direction, because he was anyway not a week in week out all player, and that is the only question mark I have in Juventus in the Champions League. Let's see if he can do that for the entire tournament. And by the way, in Juventus he was very good last time. People forget he was playing next to Pirlo.
I don't understand the concept of fans. Team loving a player for him to play. These guys are professionals. Yeah, that's also a fair point. So Lumanu and Manav, you have a point absolutely. लेकिन भाई, they're all human beings at the end of the day. एक motivation चाहिए. मतलब I know पैसा motivation should be enough, but I wish life was as easy, ना. Dybala to Madrid, is it for real? Dybala to Madrid, मैंने तो बहुत जल्दी बोला था यार कि that is something जो Madrid को सोचना चाहिए. Because if they are wanting someone to compete for the starting spot, maybe he is good enough. लेकिन is he your typical winger? No. I think Madrid rely कर रही है with Benzema being the number 9, a typical winger. इसीलिए मैं बोलूंगा वो नहीं होने वाला. I think Gnabry ज्यादा direct है compared to Dybala. Do you think of Dembele and Sterling would be really badass for Chelsea? Well, I think it will be. It will be. Well, people who are saying that we don't want Sterling, sorry boss, I don't know what you're talking about. Really. Well, I know that he's not a classical, superb, winger slash striker. Lekin he is much more proven. He gets a lot of hate because of his diving, a lot of hate because of him being English. I really believe that. Sterling is better than what people make out to be, at least internationally. So I would take him. Dembele भाई मैंने तो FIFA में भी ले लिया Almighty Sports Plus लास्ट रात को. एंटनी और फिलिक्स और रफीनिया कौन सबसे बढ़िया फिट होंगे कॉन्टेस्ट सिस्टम में? ओके, यहाँ पर अगेन रफीनिया के लिए इंटरेस्टेड है. थोड़ा सरप्राइज हूं मैं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई नो Conte is a big fan, but I am surprised because Kulusevski is there. Lucas Moura, I think Lucas Moura, talk about players who are underrated in their current clubs as well. Lucas Moura is that. Why? What did he do in the Champions League for Spurs? Remember? So I think that is underrated for me. अगर दो right-sided players already है, I know Bergwijn is going off. I don't see there's a need. I know Brian Gill is also again spoken about on going on loan, and I know Bergwijn is leaving, like I said. लेकिन फिर भी, in my opinion, I don't see Rafinha going to Spurs. Really speaking, मुझे लगता है Rafinha, Arsenal maybe because Bukayo Saka can play as a wing back as well, or Rafinha may not come to Chelsea because as per reports, for some reason, Chelsea, that is Tuchel and think tank, सोच रही है कि Rafinha might play as a wing back. Really? वो नहीं होने वाला. So that's why मुझे लग रहा है Rafinha to Arsenal, and Arsenal are doing a madness भाई. वो लग रहा है ज़्यादा likely. और fitment wise भी मुझे लगता है because they can kind of fit both Saka and Rafinha, that might be better. Felix, again, मैंने बोला यार he'll fit very well, but again, would he be a non-starter? That is no. इसलिए मैं बोल रहा हूँ weak. Antony, I think Manchester United has to get Antony. वो मुझे लग रहा है. I know 40 odd million is what the price they're talking about, and थोड़ा बहुत negotiation चल रहा है. I think Antony, for me, very likely वो Manchester United जाने वाले. And for me, ये एक तो आएगा यार टेन हाग का प्लेयर प्रॉपर, एक तो आएगा. फ्रेंकी का लग रहा है अभी as things are going further and further, लग रहा है कि he might stay in Barca, or because Bernardo Silva might not leave City, और Antony लग रहा है might go to Manchester United. I know different players, but I think somehow वो Ajax का होगा यार कनेक्शन कुछ. Okay, City, Madrid, UCL final next season. Football Creeks is already predicted. Good. Pogba was welcomed like a king in his native Guinea. Maybe he was expecting some kind of reaction from Man United fans. Well, maybe, absolutely. Yeah, मैंने देखा है श्रेय, मैंने देखा just before going to this live मैंने देखा था. Absolutely, thanks for that. और ये clearly confirm किया, जैसे मैंने बोला initial part of the stream में, that basically this is still strong interest from Chelsea for Ligt coming in and Ziyech going out. Timo Werner to Real Madrid CF reported by many newspapers. Rumor है, पर क्या ये यार सुमन मुझे नहीं लगता. But again, thanks सुमन join करने के लिए. Like everyone else, let's like, share and subscribe. Timo Werner अभी दो ही लग रहा है realistically speaking. हाँ, रियल मैड्रिड के साथ दोनों ही साल में अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, ठीक है. But I don't think that's enough. The fact is, again, Timo Werner is more like a left outside forward. हाँ, he might not be so unhappy not starting as well. जो दिखाया था, his attitude is good. लेकिन would you not say that with Vinicius being there and the form that he will have Vinicius, I really feel that Timo Werner के chances बहुत ही कम हो जाएंगे. Vinicius is far more effective on the left hand side, और Timo Werner भी वहाँ होंगे, तो वो नहीं होने वाला. तो मुझे लगता है weak. Having said that, Timo Werner, like I said, Juventus, he has been offered to. वहाँ भी आप you can argue Chiesa is there, but Chiesa again he's coming back from a long injury, so they may need one more player. They were trying for Perisic नहीं मिला उन्हें. तो Timo Werner to Juventus, इसलिए Todd Boehly has offered very tactically to get Ligt. लेकिन वही है Ligt का, will they be able to get rid of Ligt right now? I don't see that happening really, if you honestly ask me. लेकिन the third club जो हम बात करें Timo Werner के लिए, वो है Liverpool. Remember Liverpool के साथ लिंक्स आए थे पुलिसिक के. That was very strange. हाँ,
आप बोलोगे वहां भी लुइस जियाज है, ही विल स्टार्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स, बट अगेन लुइस जियाज he's a youngster who's just come in the Premier League 6 महीनों के लिए, बहुत he's done really, he's taken to fish to, he's like taken like fish to water, बहुत ही अच्छा किया. But will you say that Luis Diaz, Liverpool will want him to play like 38 games a season? I think in Premier League playing continuously is far more difficult. तो वहां पर मुझे लग रहा है टीमो वर्नर टू लिवरपूल may just happen. लेकिन again Liverpool fans मुझे पता है they don't want a Timo Werner because they are already proven कि Jota is better than Timo Werner in terms of finishing. तो again because that reason मैं बोलूंगा weak है. तो Timo Werner unfortunately might end up staying in Chelsea as things stand. That is just looking the strongest. Unfortunately, because of his implementation or application towards the end in terms of finishing, but in terms of attitude, brilliant. Yeah, he's an example pro. The only way Pogba can succeed at Juve is Locatelli, Kamara, McKennie, Rabiot working out. Rabiot might leave, by the way. I feel Rabiot might leave. Rabiot, meanwhile, Tuchel is ready to have talks with Rabiot, and because he's played in the past, people, let me know. Rabiot for Chelsea, do you see that happening? Rabiot might वो लीव तो करेगा लेकिन कहाँ जाएगा? Maybe not Chelsea, but he might leave. Okay, days ago, La Liga official page tweeted that a big signing is coming this week. What's your guess? Is it a bait or something? Well, again, maybe they are talking about Lewandowski at that point. Lekin Lewandowski has not kind of gone forward. That's what my guess is. Okay, next quiz show early next week hoga. Hopefully, we'll try to do on Monday night. Okay, lekin we are doing a lot many other shows over the weekend, right? So please follow us on both the channels. Lida, good one. Barca withdrawn their offer for Dembele. Just now, Ankit bhai. Oh my God, Aniruddha, ये कहाँ से report आई है? Please confirm the source. It's not over until it's over. Nitesh Bol, absolutely. If Leva doesn't come, Kunde will be confirmed because Chelsea don't want money him now, right? Well, Chelsea want him, but not at 65 million. Come on, 65 million for a Jules Kunde? No way. People, come on, likes कर दो, कंजूसी मत करिए likes में. कितने likes हुए भाई? मैं देख रहा हूँ. Come on, 100 likes भी नहीं हुए. Come on, we need to get to 300 likes. आप देख लो. हाँ, likes target बहुत ज़्यादा है because I'm pretty sure इतने लोग और इससे डबल या ट्रिपल देखेंगे और देखना चाहिए भी क्योंकि वी आर कवरिंग न्यूज ऑफ एंटायर वीक ऑफ द प्रीमियर लीग, ला लीगा, लीग Serie A and whatnot, Bundesliga भी. Ake would be great as he will be cheap, 25 to 35 million, and he will understand what Chelsea is all about and has improved a lot since leaving us. Okay. By the way, Ake से याद आया because हम बात कर रहे हैं deals which might actually happen. More likely, जैसे मैंने बोला था, Kalvin Phillips to City. तो meanwhile, Leeds are also trying Tyler Adams, भाई. Tyler Adams to Leeds लग रहा है, तो that is why they are able to go it quicker. तो यार Chelsea fans don't get so disheartened. हाँ, maybe आप बोलोगे Laporte would have been a better one. ज़्यादा greedy हो रहा है, I know, from City. लेकिन I think Ake is dispensable compared to Laporte. Despite Ake cover करते हैं 2-3 positions, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि Laporte ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा प्रूवन है, ज्यादा काम है इन टर्म्स ऑफ सेंटर बैक और हाइट फैक्टर आल्सो काउंट्स टू सम एक्सटेंट, राइट? हेलो जसकरण, some sources say that after the rebuild, Boli won't go hard on achievements. This season, top 4 will be a priority. Yeah, possibly. Burley, I heard, is going for the long term, or that is what has been in LA Dodgers. Having said that, LA Dodgers के साथ यार मेसन माउंट और टीमो वर्नर पाए गए LA Dodgers में, तो मुझे लगता है टीमो वर्नर तो रहेंगे. लेवा का एक्सेप्ट कर सकती है बायर्न, बट मिनिमम 50 मिलियन देना पड़ेगा और कुंडे भी आ सकता है पर लोन प्लस बाई करेगी. ओके, लोन प्लस बाई पता नहीं यार. अगेन सेविया को कोई अर्जेंट नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं, बिकॉज डिएगो कार्लोस ऑलरेडी हैज लेफ्ट सेविया, तो आई डोंट थिंक दे आर इन अ हरी, दे वांट द मनी. Will Rafinha come to Chelsea? Again, मैंने बता दिया है, as a wing back is what the reports are, which is very strange. Just like Adama Traore के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट सीजन, तो आई डोंट थिंक अगर वो सच है तो आएंगे. तो मुझे लगता है इट्स मोर लाइक स्टर्लिंग कमिंग एंड मे बी टीमो वर्नर स्टेइंग एज वेल. बट लेफ्ट फुटर अनफॉर्चुनेटली वी माइट लूज इन Ziyech. Okay, fair enough. Gundogan is way better than Kalvin. He could be groomed into box. Yes. Also, he has played a lot on the Bielsa. Yeah, that's a good point. Absolutely. If Werner goes in swap deal, we might need Havertz replacement. पता नहीं यार, मुझे लगता है यार वर्नर जाएंगे ना तो मतलब हम बात करें ना डेम्बेले और स्टर्लिंग, दैट माइट एक्चुअली बिकम अ रियलिटी. भाई फीफा इज पपेट ऑफ मनी बिकॉज दे बैंड. अरे सॉरी यार, मतलब सॉरी टू हियर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली फीफा हम सब जानते हैं. Dembele will stay because he doesn't have other offers for Chelsea. Okay,
but not proper contract offered. Yeah, मतलब वही है, अभी वही लग रहा है, but let's see what happens. अभी time है. I think things will change depending upon Sterling to Chelsea. क्या open है? Of course, Werner going to Juventus or not. Rooney to United, Neymar to United. Hey, by the way, Rooney, yes, Rooney has basically resigned from his position at Derby, from what I know. Great service उसने किया, तो shout out to Rooney. बहुत ही difficult circumstances थे. Talk about Tuchel at Chelsea. Rooney had that and a half. So Rooney at Derby County, well, very well done. But Rooney to United, let's see if that is for real. अभी के लिए नहीं मुझे लगता है. Come on, he should go at maybe a next level club. Having said that, Neymar to United, interesting. Now Neymar definitely has been offered, but 50 million again, like Lewandowski, is a price as a minimum. I think if I'm not wrong, 50 million pounds. Correct me if I'm wrong. I think that's a bargain. That is a bargain. आप बारसा को ऑफर किया गया हो फॉर 50 मिलियन. आई नो प्रीमियर लीग का टैक्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा. यहाँ पर 50 मिलियन पाउंड विल बी इक्वल टू मे बी 75 मिलियन पाउंड इफ नॉट मोर. It is a bargain, man. It is a bargain. If it's true reports, that is. Neymar at anywhere under 70-75 million, I think is a bargain in today's day and age. सच में बोल रहा हूँ मैं. Even in the Premier League. So Tuchel भाई साहब, टॉड बोली भाई साहब, बात करिए, कुछ करिए वहां पर. Yes, क्योंकि यार अगर टीमो वर्नर जा सकते हैं, डिलीट आ सकते हैं, आई डोंट, वो बहुत आइडियल केस होगा. सपोजिंग डिलीट आ जाएंगे, जस्ट सेइंग आउट ऑफ देयर, लाइक 120 मिलियन यूरो से दे रिड्यूस इट टू समथिंग लाइक, अगर टीमो वर्नर के साथ में दे रिड्यूस टू समथिंग लाइक 70 मिलियन. आई नो वी आर प्लेइंग फीफा हियर ऑलमोस्ट, लेकिन 70 मिलियन अगर कर देते हैं, देन अनदर 70 मिलियन यू पुट नेमार, यू गेट इन 140 मिलियन की दो साइनिंग्स प्रॉपर, बोल्ड साइनिंग्स हो गए. That is what I'm talking about. And don't get a Rice. You get for a stopgap. Go for a stopgap central midfielder, or don't change the formation. Go with Jorginho. That's what I would say. इतना टी शर्ट है, एक आध दान भी कर दो यार. अरे कोई नहीं, दो चार दान भी करेंगे. Absolutely. Bro, Barca just withdrew the offer, Mr. De Jong. Yeah, by the way, talking about Dan, again, I am actually waiting for us to kind of cross a certain hurdle. Of course, वो hurdle cross हो जाएगा, तो I have given a shout out already that we will be doing a giveaway in the beginning of the next season. I'm working on basically a jersey giveaway in the beginning of the next season. We'll be doing that, but again, hopefully by then we're not only monetized on both the channels, but again we get a lot more members to kind of support the channel, so that we are able to do a lot more things that हम सब जानना चाहते हैं. But definitely that's on, yeah, Tushar. Barca just withdrew the offer. Okay, interesting. Yes, subscribe to the channel. Do not forget to subscribe. Always helps. Barcelona should go for Neves or Gundogan. They will be cheaper. I think Gundogan है काफी अच्छा stretch out है यार. Gundogan is a good shout for Barca. Again, La Liga में, nothing against La Liga, but you know that I feel that La Liga में week in week out, Gundogan will have far more easier work rate in terms of Premier League versus La Liga. I think that's a brilliant shout. Neves, I don't quite believe, क्योंकि again depends on basically how Kessie comes up, because I think Gundogan आएंगे तो at least Kessie will be okay to sit, but I don't think Neves he'll be okay to sit. That's the only thing. If Werner goes in swap deal, we might need Howard substitute. Okay, I already did that. Now Tuchel is going for a false 9. Well, Tuchel always wanted to have a focal point, I believe so, क्योंकि Haaland was the first target, then Lukaku, बीच में एक और स्टुटगार्ट के स्ट्राइकर थे, क्या नाम है उनका, बेसिकली Salihamidzic नहीं है, Kalajdzic. He was also rumored very much. Broja, meanwhile, yes, the fact that of Broja, as per reports, Chelsea are open to talks with West Ham. So if that happens, whether Broja himself wants it or Tuchel is open to selling him, just like he was open to selling Tammy and Giroud, time will tell. Lekin again, मुझे लगता है Tuchel wants basically someone who can finish. It doesn't matter कैसे. That I really feel. City are going for Joao Felix. इसलिए Tuchel was interested in Lewandowski, by the way. City are going for Joao Felix if Sterling and few others. Yeah, exactly. जैसे मैंने बोला, Joao Felix to City हो सकता है. That might be looking very likely. लेकिन also I believe कि Alvarez अगर जाएंगे तभी होगा, because remember Grealish, he's not been starting a lot of games. He will probably start next year, right? Hudson-Odoi is still young and has a lot of football to learn in Chelsea, just like Chalobah. Yes, but I believe he should go on loan. That's my point, Shrey. उसे जाना चाहिए loan पे and come back maybe more confident. For me, the greatest transfer ever was Lukaku to Chelsea, and Antony Griezmann to Barca was iconic. Surely on second spot, Coutinho literally won the Champions League after joining Barca. Okay, fair enough. See the new tweet of Absolute Chelsea. चलो देख लेते हैं क्या tweet है.
एब्सोल्यूट चेल्सी का देखते हैं क्या ट्वीट है भाई, कुछ है क्या, बवाल मचा है क्या कुछ? Okay, ready to make the move. How likely do you think it is the right? Okay, नहीं, it's the article, yeah. Okay, Todd Burley is determined to find new ways to reshape the Chelsea squad for Thomas Tuchel, and Barcelona are thinking about withdrawing their contract offer to Chelsea target Usman Dembele. There's a division between the board, as some believe it would be a logical decision of the club's image to withdraw the offer. Interesting too. Dembele might stay at Barca. Anyway, thanks Lucy for sharing that, and thank you Suryansh. Hopefully हो जाए यार, मतलब I don't know. I believe in Gerard Moreno. Okay, fair enough. अगर City buys Felix for 50 to 60 million, there is a rumor going around Sterling to Madrid. Or Sterling to Madrid. भाई don't tell me यार, we are being gazumped every transfer में आज इस महीने. Is cooled off, Barca about to sign him. Yeah, that again मैं बोल रहा हूँ, नेथन आकी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और डिलिक्ट का भी स्ट्रांग हो गया, तो मुझे लगता है नेथन आकी का kind of comes to Chelsea. I don't think De Jong would accept a pay cut now. Keeping him would be tough. I don't know यार, मतलब to be honest, apart from don't get me wrong, apart from maybe Man United legacy and apart from Eric Ten Hag, I don't think money should be a factor in De Jong moving to Man United. Really, he has worked so hard for his Barca position, so it's kind of very strange. I think the only way that he moves out is if they get a hard, proper replacement by, and that would have been Bernardo Silva, which is an upgrade. That is my call. Yeah, I don't think they really need Rafinha. Exactly, you hit the nail on the head. Frankie नहीं आएगा तो मेरा तो फायदा है. Sterling almost single-handedly led England to Euro finals and World Cup semis. We should give him some respect. Yeah, I agree. उस समय मैंने भी criticize किया था before that, but he proved us all wrong. Big up Ankit, hope you're well, bro. Big up to Talk Everyone. People, by the way, by chance आपने नहीं किया है, subscribe to not only Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus. Check out Football versus Cancer. Yes, it is a channel on a mission. It is a mission against cancer via football, started by brother Talk MU, and it's linked in the description below. Subscribe or I'll eat your biryani, Borussia City Hub. Nice one. The rumor news tag of Chelsea just अरे भाई Adwe in the house. Big up Adwe. Gnabry कहाँ जाएगा? City हम मुझे लग रहा है Real Madrid जाएगा, but time लगेगा, जल्दी नहीं है कुछ दोनों क्लब्स को. We literally can't sign any player unless we do sales, so no Werner to Real Madrid. Well, again वही है, मतलब very good point Manjunath, very good point. हम easily frustrated हो जाते हैं, but we have इतने सारे players. Imagine we have a Barkley, we have a Loftus-Cheek, we have Timo Werner, we have Hudson-Odoi in attack, in midfield and attack. इतने सारे players. Defense is where we need bodies. Literally we need bodies. Need Son to join Chelsea or Madrid. भाई अगर Son आ जाए ना Chelsea में, बवाल मच जाए यार. That will be the transfer of the Premier League, in recent times. लेकिन नहीं होने वाला, you know it. One out of the box dream signing for your club, जो होना इतना मुश्किल है जितना सिटी का UCL जीतना. I will go with Kimmich. Okay, interesting. Kimmich to City अगर हो जाए तो that would have been a dream signing. I can understand why. Maybe it would have been Nele पे Dela with basically Kalvin Phillips का upgrade. Even at right back he can play. लेकिन I can understand. मेरे लिए ना one particular signing जो last season में इतना नहीं चले थे. I know थोड़ा सा left field होगा. मैं जाऊंगा ड्रीम साइनिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लेफ्ट फील्ड में बोलूंगा, like I always like to do. It is Goretzka. Talk about Kimmich. That remind me of Goretzka. Goretzka to Chelsea, yeah. The guy is a maniac. He does what Michael Ballack did. Yes, and that's what I like Goretzka for. हम वैसा player एक miss कर रहे हैं, who can also score goals, who also has a steely element, जो basically you can play in different formations in midfield. But in terms of dream signing, I wanted Lewandowski, to be very honest, इस season के लिए. Because we need the goals. I really need the goals. Defense में you would say that you want Koulibaly, you want basically Dumfries, you want Hakimi. लेकिन नहीं यार. Honestly speaking, it is the goals which wins you titles, and that's a reality. Yes, you can argue that defense के बगैर नहीं कर सकते. लेकिन यार, we can still kind of groom people in defense. Forward line में you need people who can finish with confidence. अरे सुमन ये कहाँ का सोर्स है? If you can just confirm with this, and of course people, come on, we are into 93 likes. It should be having at least 150 likes यार. आधा likes तो कर लो at least target का. At least half the likes, if not full. Rabbi and Tuchel don't have a good relationship. हाँ,
So there is actually some misunderstanding as just while up. So you know what the misunderstanding is. The thing is, yes, Rabiot and Tuchel did not kind of part ways in the greatest manner at PSG. That's a true thing. Lekin, as per reports, it was basically what happened. Like Tuchel was trying to save PSG's ass, and Rabiot wanted to leave at that time. ठीक है वो हुआ था, and because of that it was projected कि Rabiot and Tuchel don't have a good relationship. In a sense, the opposite of what happened between Tuchel and Christensen. ठीक है Christensen का Tuchel was saving Christensen's ass, but you know what the fact is, right? That was what happening. So I think Rabiot and Tuchel again. I think if I'm not wrong, I've seen reports also saying that Rabiot, rather Tuchel likes Rabiot and would like to talk to him. I don't think अगर रिलेशन खराब भी है ना, मुझे नहीं लगता there can be a problem forever, because remember, really speaking, if you all remember, Jose Mourinho and Roman Abramovich really split in a very bad manner in 2007. लेकिन आए भाई जोसे मुरिन्यो वापस चेल्सी में. So things can change. I know managers का अलग होता है, but players का और भी easy होना चाहिए, because they can be molded easily, they can be explained easily. But is he that world class player anyways? I don't think so. मतलब again, if we are selling Jorginho, only then I'm seeing Rabiot coming in. He's not the like for like replacement, but a different option for sure. Bayern treating Leva badly? I don't think so. The Bayern is doing a Bayern. I don't think वो एक special treatment कर रही है. Leva wants special treatment. Again, I don't know inside सच में क्या है, but that is what is seeming like absolutely. But again भाई सब लोग यहाँ पर जो भी है सब लोग like कर दीजिए. We should have more people joining in hopefully, because हम और भी news लाने वाले हैं. Now the thing is, थोड़ा और मैं quick जाने वाला हूँ. Again आपको अगर prioritize करना है comment, you can always super chat. Otherwise, I'll come back to you. Please have patience, because I'm covering literally entire week of transfer stories, right? So Inter Milan, थोड़ा बात कर लेते हैं. Inter Milan, where are you seeing Inter Milan in Serie A next season? Lukaku होने वाले. I know Inter Milan ultras said that do not welcome Lukaku the way he is expecting to. What do you think about that as well? लेकिन the fact is, if he goes, Lautaro Martinez will stay there, and Dybala also going there. अगर Real Madrid नहीं जाते Dybala, मुझे लगता है ज्यादा लाइकली अभी भी है इंटर. दे माइट एक्चुअली बी एबल टू डू अ मैडनेस इन सेरिया. Mkhitaryan भी has gone to Inter on a free. So Mkhitaryan, Lukaku, you have Lautaro Martinez and Dybala. What a brilliant forward line, and they have covered there as well. तो आप देखो वहां पर हाँ बहुत सारे चेंजेस हैं, too many changes, but at the same time they'll do well absolutely. Onana in goal also coming. Skriniar they might lose to PSG. अभी भी वो लग रहा है mighty. Having said that, let's talk about another Italian club, Serie A club or Juventus. I know हमने बात करी है Paul Pogba के बारे में. Paul Pogba will be brilliant in the Serie A. I think वो कर देंगे job what is required from him. लेकिन would he be able to also transmit that in the Champions League or vice versa? He'll do only in one tournament, or rather only in 1.5 tournaments. वो पूरा दोनों tournament में नहीं करेंगे. That's my opinion. But it also depends upon what is the role that McKennie is playing coming back from injury. ठीक है. और how is Chiesa coming? क्योंकि लेफ्ट साइड में आई थिंक एक ट्यूनिंग होगी between Chiesa and Pogba. Sadio Mane to Bayern Munich. How are you rating this? Sadio Mane to Bayern Munich, I would say it's a mighty transfer. He'll score goals for fun. I think it's more like आप स्ट्राइकर नहीं रिप्लेस कर रहे हो, but आप गोल्स एटलीस्ट ला रहे हो. और मिनामिनो टू मोनाको भी गए लिवरपूल से, तो वो मिनामिनो के लिए काफी अच्छा है. बट अगेन लिवरपूल के लिए लॉस आप बोलोगे. काफी लोग छोड़े, साडियो माने, मिनामिनो, ओरिगी जो एसी मिलान होने वाला है एनी मोमेंट. फॉर्मल, आई नो इट्स मैटर ऑफ टाइम, बट pretty sure that Minamino going to Monaco will not be Liverpool's loss. मेरे ख्याल से हावी एलिट के लिए गेन होगा. He'll get more minutes. I absolutely believe that. And Arsenal भाई, Marquinhos on the wing, Fabio Vieira midfielder. हाँ, malnutrition लग रहे हैं भाई नए किट में. I don't know, but is he a starter? No. But is he going to covering for the Europa League? Of course, he's going to be covering. A good cover है. Gabriel Jesus अगर हो जाए तो आर्सेनल की माइटी ट्रांसफर विंडो ऑलरेडी मैं तो बोलूंगा भाई नेक्स्ट लेवल. रफीनिया अगर हो जाए तो ऑलमाइटी ट्रांसफर विंडो, जस्ट लाइक बेसिकली इंटर इज डूइंग इन सीरिया. लेकिन बार्सिलोना में कौन लग रहा है सबसे लाइकली आज? आई थिंक वही है, कुंडे इज लुकिंग मोस्ट लाइकली. दैट इज द नियरेस्ट नेक्स्ट साइनिंग आई एम सीइंग. बार्सिलोना में कुंडे आ जाएंगे. मुझे नहीं लग रहा बर्नार्डो सिल्वा आएंगे, एंड आई थिंक फ्रैंकी डी जॉन्ग माइट जस्ट स्टे. हाँ, थोड़ा नेगोशिएशन की दरकार है, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से. ही माइट स्टे. बट मैन यूनाइटेड फैंस विल नॉट बी हैप्पी हियरिंग दैट. तो मैन यूनाइटेड आप किसको ला रहे हो? मुझे लग रहा है
क्रिश्चियन एरिक्सन टू मैन यूनाइटेड इज लुकिंग माइटी, ठीक है, क्रिश्चियन एरिक्सन आ जाएंगे मैन यूनाइटेड में, दे माइट गो विद अ डबल पिवट, और Julian Timber obviously they are losing out in defense, he is going to stay at Ajax as per reports, the new manager wants to play with him, wants to play with Antony as well, लेकिन Antony मुझे लगता है मैन यूनाइटेड आ जाएंगे, एटलीस्ट एक तो आएगा. Then who else? मैन यूनाइटेड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाउ टॉरेस के पीछे थे, बट नाउ दैट यू नो दे आर नॉट गेटिंग Julian Timber, आई नो नॉट राइट सेंटर बैक पाउ टॉरेस, लेफ्ट सेंटर बैक ज्यादा खेलते हैं, but I feel that Pau Torres they might actually go and buy him, because very strangely Pau Torres to Spurs be is cooled off for some reason, right? लेकिन रिचार्लिसन का क्या बोलोगे यार? रिचार्लिसन अगर चेल्सी को नहीं मिलता स्टर्लिंग, आई थिंक द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिचार्लिसन. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट हिम, बट इट इज अ फैक्ट. हाँ, ही इज लिटिल बिट बैगेज्ड, प्लस आई थिंक वो इतने अच्छे फिनिशर नहीं है इवन लाइक अ स्टर्लिंग, लेकिन is he basically an upgrade to Werner? अगर Werner जाते हैं, I don't think so really. Ankit should come out from retirement and replace Lukaku. Thank you. Isn't Son a fluke player? Absolutely no. Absolutely no. काफी महंगी joining आप चैनल की, थोड़ा सस्ता करो. अच्छा महंगी है? अरे भाई मुझे तो लग रहा है काफी सस्ता है. If you kind of compare with other channels, just saying it out there, it's a fact. इसलिए मैं बोल रहा हूँ. लेकिन आप कोई नहीं लप्पू का मेसी मेरे ख्याल से नहीं है, बट अगर काफी लोग बोलते हैं मुझे, आई विल रीथिंक ऑन दैट. लेकिन अगेन थैंक्स फॉर जॉइनिंग ऑलवेज. बिग अप टू मैट एज वेल, मैट फ्रॉम जोई, ब्रिलियंट चैनल, पीपल हु चेक हिम आउट. चेल्सी फैन इन द हाउस, 218 वोट्स, ओनली 100 लाइक्स. सो अनफेयर यार, काफी नाइंसाफी होती है. आई डोंट नो, लाइक के लिए पैसे नहीं लगते, सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं लगते, वो तो एकदम फ्री है भाई. तो दोनों चैनल्स में कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोनों स्ट्रीम्स में जो आज होने वाले कर देना लाइक, ये वाला, और रात को हम आएंगे फुटबॉल फीफा के साथ. माई बीइंग मोर टची टुवर्ड्स चेल्सी ट्रांसफर्स दैन चेल्सी अंडर 18 कोचेस. वेल, सेबास्टियन हैलर जाएगा बायर्न नेक्स्ट सीजन फ्रॉम द फीडर क्लब. अरे मुझे नहीं लगता, मतलब आई नो व्हाट यू आर सेइंग फुटबॉल पीस, मुझे लगता है सेबास्टियन हैलर टू बाय डॉर्टमंड, एज मच एज पीपल बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ फिट एंड ऑल दोस थिंग्स. Jury is out. Remember, he's had one terrible spell in England and one great spell in Eredivisie. अब देखते हैं क्या होता है इन डॉर्टमंड. और बाय द वे डॉर्टमंड के काफी फॉरवर्ड्स है, तो अच्छा कंपटीशन भी होगा. तो लेट्स सी, he'll not have as much time जो people are thinking he'll have, right? If Dybala joins Inter and Dumfries stays, I see Inter leapfrog AC. Only if AC can sign Ziyech. इसलिए जा रहे हैं ना AC Ziyech के लिए. Ziyech, Sanchez, can they upgrade? Sanchez unfortunately नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है PSG. Not sure about Pogba. They don't have players with the like of Pirlo, Marquinhos. Yeah, fair enough. लेकिन हाँ, I think Ziyech to AC Milan would be like awesome fit. Almighty fitment मैं बोलता हूँ भाई. Because AC Milan आज के दिन में that right winger they're actually missing. They don't have that high class right winger. Yes, Godzilla says, wow, Martinez and arguably Tielemans. नहीं, Tielemans नहीं लग रहा मुझे. Tielemans नहीं लग रहा Godzilla. As per reports, काफी सारे tier 1 जर्नलिस्ट ने बोला है कि Tielemans for some reason is not as close as what we were thinking. Okay, United ends up nobody calls. नहीं कोई तो आएगा यार, come on. Definitely कोई आएगा, टेंशन नहीं लेने का. Chelsea ex-Midfield Deco is agent of Rafinha. Let's see. लेकिन वही है, अगर आप विंग बैक खिलाने की बात करो तो क्यों आएगा भाई वो. My sources have told me players are not coming to Man United because of Maguire. भाई साहब. Is Lewandowski staying at Bayern? अभी के लिए तो वही लग रहा है, किशोर क्रिएशंस. With every passing day ज्यादा वही लगने वाला है. Barca should give up on Rafinha. 75 million is too much for them. We should rather sign Di Maria for 1 year. Yeah. अभी लग रहा है Dembele might just stay. हर्षित by the way. भैया एक बंदा एक ही लाइक क्यों कर सकता है? अरे यार क्या कमेंट है ये. सिटी अब थैंक यू. कोई नहीं, एक बार लाइक कर दो सब लोग, वो भी बहुत है. मैं तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना. लेकिन मैं तो कुंडे, मी टू कुंडे इफ ही जॉइंस बारसा, कुंडी लगा के सो मैं आ रहा हूँ. अरे भाई याद गोल फ्रॉम आवर अकाउंट. कुंडे टू बारसा विल बी लोन प्लस बाई बिकॉज सेविया हैव गुड रिलेशन. लेकिन डजंट सेविया नीड द मनी? आई एम जस्ट थिंकिंग सेविया को पैसे चाहिए भाई. Richarlison can do that backup striker role for Spurs as well as play on the wings backup as well. He can, but will he be? That वही है ना मेरा, जो when I'm saying baggage, the problem with Richarlison is that he will not be happy. I think वो scene create करेगा भाई off the field. हाँ, Sven Botman to Newcastle भाई यार क्या है यार, 40 मिलियन में मिलते हैं इन लोग को. हम लोग को चेल्सी के लिए कोई भी सेंटर ऑफ करते हो तो भाई कम से कम 50-60 मिलियन के कम आते नहीं. स्वेन बॉटमैन फाइनली, इनका भी चल रहा है जूस करने, तो चेल्सी बहुत
महीनों से बात, लेकिन फाइनली हो रहा है, राइट? और 40 मिलियन के अंदर आ रहे हैं भाई, अंडर 40 मिलियन, थिंक अबाउट इट, दैट इज लाइक वाओ, दैट इज समथिंग एल्स, राइट? तो यहाँ स्वेन बॉटमैन टू न्यूकासल, मैं बोलूंगा माइटी ट्रांसफर है भाई, क्योंकि आई थिंक ही विल बी एन अपग्रेड टू डैन बर्न इन बिग मैचेस। हाँ, डैन बर्न इन मैचेस जहां पर आपको फिजिकलिटी चाहिए, तो आई थिंक ब्रिलियंट साइनिंग होने वाला है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट साइनिंग। तो हाँ, प्रीमियर लीग नया है, लिल में was he like as convincing against Chelsea? Maybe not. Lekin we have seen the player. He has it in him to do it very well. In my opinion, Sven Botman to Chelsea, Newcastle, brilliant है. तो चेल्सी बोल रहा था लेकिन कोई नहीं। और यस, मतलब काफी सारे न्यूज हमने शेयर की है। लेट मी सी अगर कपल ऑफ न्यूज और है जो मैं शेयर कर सकता हूँ बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम। पीपल, लेकिन यार अभी भी यार काफी क्लब्स को चाहिए एक सेंट्रल मिड। तो सेंट्रल मिड मतलब हु इज गोइंग टू कम यार? इवन मैथायस नूनेस इज नॉट कमिंग टू वुल्व्स फॉर व्हाटएवर रीजन, वो अग्री नहीं कर रहे। एकिटिकी क्या नाम है वो, न्यूकासल, वो भी अग्री नहीं कर रहे फॉर सम रीजन, दैट इज नॉट हैपेंड। Man City is getting a backup goalkeeper in Stefan Ortega. That will be a good move for them. Definitely, अभी जो है Zach Stephen उनसे upgrade है. Longley might move to Olympic Marseille. Barca fans, what do you think about that? लेकिन again, things have not moved on as what हम expect कर रहे थे. लेकिन I think these are all the news that I remember from basically last 24 hours to 48 hours. Of course, Nick Pope आप rate करिए. What about that move? मतलब इज इट अनफेयर ऑन डब्राउस्की, क्या नाम था उनका? लेकिन हाँ, अगेन फॉर मी निक पोप विल बी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे अंडररेटेड गोलकीपर है, एटलीस्ट फॉर इंग्लैंड ही शुड गेट सम चांसेस एट सम पॉइंट, राइट? लेकिन क्रिस्टोफ गैल्टियर टू पीएसजी एज अ मैनेजर होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और मीनवाइल मैन यूनाइटेड के मलेशिया जो लिंक थे ना लेफ्ट बैक, वो जाने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लियोन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, he is not going to be going to Manchester United. Imagine that. Because they already have a Luke Shaw, they already have a Telles. I anyway didn't see that, to be very honest. Milinkovic Savic, हर season श्रेय ओबरॉय, by the way, श्रेय FC के लिए shout out. Every season we get linked, every season a lot of clubs get linked. Brilliant player, but not proven in other leagues. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा risk factor है, लेकिन worth the risk. Yeah, let's see if this is enough. पहले 40 million के पास था, अभी 50 to 60 million तो hopefully हो जाएगा. Yes, absolutely. बस एनीवे यार, अभी यार आई एम गोइंग लाइव। शाउट आउट है टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स। तो जतिन भाई को शाउट आउट है इनसेन फुटबॉल टॉक्स। आई थिंक मोक भाई भी आएंगे, तो मैं और मोक भाई अभी लाइव है ऑन इनसेन फुटबॉल टॉक्स इन द नेक्स्ट 2 minutes, सो डू जॉइन देयर जो भी है। एंड बिग अप टू मटाटा यूनाइटेड, बिग अप टू ऑल द मेंबर्स, ऑल द मॉड्स, मानव, अनिकेत, थैंक यू अगेन। कोई अगर प्रायोरिटाइज करना चाहता है तो यू कैन ऑलवेज सुपर चैट, यू कैन ऑलवेज बिकम अ मेंबर, लेकिन वी ट्राई एंड टेक एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। लेकिन हमने कवर किया है ऑलमोस्ट पूरे वीक का न्यूज, तो काफी सारा न्यूज है, डू रीवॉच अगर आपने मिस किया है। एंड विल बी बैक टुनाइट ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन बोथ द चैनल्स because we are doing a lot more content. Do check it out, देखा करो यार, फिर decide करो, and do press that bell notification icon because we'll come back with shorter videos and a lot more tomorrow as well on this channel. Till next time, take care. But yes, again, these are stories that will be keep coming, so we'll take on to the next stream, right? अभी के लिए shout out to Insane Football Talks, to Jatin and to everyone in the house जो है. Yes, definitely, we are working on it. Don't worry on that. लेकिन we do a lot more. So I don't want this to become a quiz channel, but I know you love that, तो हम वो continue definitely करेंगे, and we'll do for cricket as well on Almighty Sports Plus, जहाँ पर हम फुटबॉल भी करते हैं for people who don't know. Please do check it out, right? Thank you everyone. Take care. Bye.